लाइट चले गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आज? Hi guys, I'm Riddhi. Welcome back to my channel. If you're new here, hi, hello. So in this video, I bring to you 12 hacks of Holi that's tomorrow. So make sure you watch this video till the end and only then step out to play Holi with your friends and families, as these might help and save you from all the trouble. So without wasting any time, let's get into the video. So the first hack that might save you from unwanted rashes on your body before you step out to play Holi is actually to wear cotton ke kapde. So because cotton ke kapde is very much breathable and they might not give you rashes as much as the synthetic kapde would. So I would highly suggest you to wear cotton ke kapde and only then go out and play Holi. So the second hack is to actually apply body oil or olive oil or almond oil or coconut oil, whatever oil that you may prefer, onto your exposed areas of the body. So this might actually help the colors to slip down. जब भी कोई आपके ऊपर color apply करने के लिए आएगा तो it might actually help the colors to slip down from your body, further not making it stick to your body parts. So it's a very good hack. So the third hack is actually a very basic hack, or even you might call it a thumb rule, because I'm pretty sure a lot of you might be already knowing this hack. The hack is to apply hair oil on your scalp and throughout your hair and then make it into a high bun or a low bun. आप इसकी चोटी भी बना सकते हो, a very tight one, जिससे जब भी आप कलर्स के साथ खेलो तो कलर्स आपके रूट तक या आपके स्कैल्प तक ना पहुँचे, जिससे आपको बाद में कलर्स निकालने में आसानी हो. So make sure you remember this and do this before you go and play Holi. So the fourth hack is to actually apply a water resistant sunscreen throughout your body and on your face and on your neck. इससे क्या होगा ना, जब भी आप पानी से खेलोगे तो पानी से आपका सनस्क्रीन जो है वो निकलेगा नहीं और आपको सनबर्न से भी बचाएगा. So it is a win-win situation. Talking about water now, the fifth hack is to actually put cotton के balls in your ears. तो क्या होता है, जब भी हम पानी से खेलते हैं तो पानी कभी कभी कान में चले जाता है या कलर्स जो है कान के क्रेविसेस में चले जाते हैं, जिससे वो क्लीन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. तो अगर आपने कॉटन बॉल डाल के रखा है, उससे फिर बाद में आपका ईयर भी प्रोटेक्टेड है और आपको क्लीन करने में भी बहुत आसानी होगी. सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस हैक. So the sixth hack is to actually apply a darker nail polish on your nail bed, जिससे ना आपके nails tinted नहीं होंगे और उसके ऊपर if you apply any oil or even Vaseline for that matter under your nails and over your nails, तो उससे जो भी colors है वो अंदर nails में जाके जमेंगे नहीं and it will be easier for you to remove it later on. So remember this one as well. So this hack is for all of you guys जिनके eyes irritate होते हैं जब भी आप होली खेलो. तो what you can do is take natural rose water and put it in your eyes like 2 or 3 drops and then let it sink in and उसके बाद आप जाएं और होली खेलें. तो इससे क्या होगा ना, आपकी आइज़ रिलैक्स होंगी और ज़्यादा इरिटेट नहीं होंगी और ज़्यादा जलेंगी नहीं. सो अगर आपने ये हैक नहीं ट्राई किया है तो आई हाईली सजेस्ट दैट यू डू इट, बिकॉज ये मैं पर्सनली करती आ रही हूँ. अब ये सारी हैक्स हो गई फॉर यू गाइज टू keep in mind and prepare before you go to play Holi. Now I want to share 2 hacks with all of you guys while you play Holi. So first hack is to actually remember to not wear any nose rings or a very chunky earrings, जिससे क्या होगा जब भी आप खेलो तो वो खींचे नहीं या किसी से आपको चोट लग सकती है. तो it's better if you avoid wearing nose rings and chunky earrings. Second hack which I want you guys to remember while you play Holi is to not wear a very स्लिपरी चप्पल, लाइक जो एकदम सिंथेटिक से रबर के सोल वाले चप्पल होते हैं वो मत पहनिए, बिकॉज जब भी आप भाग रहे हैं या अगर आप खेल रहे हैं तो आप फिसल सकते हैं. तो मेक श्योर यू डोंट वेयर अ वेरी स्लिपरी वन. Now let's talk about the hacks that might come handy after you're done playing Holi. So the first hack is for your hair when you're actually done playing and you come back home. So what you have to do is dust off all the excess colors from your hair with a dry towel and only then go and shampoo it and rinse it off with a mild hot water. And because now you're using a very hot water, देर आर चांसेस कि आपकी जो बाल है वो ड्राई हो सकती है. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर इवन इफ द कलर इज नॉट आउट,
Make sure you condition your hair first, and उसके you just condition your hair, rinse it off, and then go ahead and use a second round of shampoo. इससे क्या होगा ना, आपके बाल ज़्यादा ड्राई नहीं होंगी और आपकी जितनी भी कलर्स है वो भी निकल जाएंगी. Now talking about removing colors from your body, it's a very tedious job. So what you can do is make a mixture of haldi, besan, mix it and apply it all over your face and your body, and then use some oil and then rub it off. So उससे क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली विदाउट ऑयल रब करेंगे तो आपकी स्किन ज़्यादा इरिटेट हो सकती है, ज़्यादा खिंच सकती है. तो आप क्या करिए, थोड़ा ऑयल लीजिए हाथ में और फिर उसको धीरे धीरे रब कीजिए. उससे क्या होगा, धीरे धीरे निकल जाएगा, छुट जाएगा, कलर्स भी छुट जाएंगे और जो भी आपकी बेसन का उपटन है वो भी निकल जाएगा. I've seen many people try to exfoliate their face right after they've come back from playing Holi. So I would highly suggest do not do that, because उससे क्या होगा, आपकी स्किन ऑलरेडी पानी से, कलर्स से, धूप से इरिटेटेड है. उसके बाद में आप उसको निकालने के चक्कर में उसको और ज़्यादा एक्सफोलिएट कर रहे हैं, उससे और आपकी स्किन इरिटेट हो रही है. तो might as well just use some mild cleanser. Cleanse it off. अगर फिर भी ना निकले तो go and take a steam, open your pores, then again go ahead and cleanse your face and try to remove it off that way. So this technique would not actually irritate your skin as much as exfoliating your skin. Now to bring moisture in your hair back, what you can do is apply some hair mask. तो आप या तो बनाना मास्क अप्लाई कर लो, या आप एलोवेरा लगा लो, या आप दही का एक मिक्सचर बना लो. तो दही के मिक्सचर के लिए all you have to do is take some dahi, take some olive oil या coconut oil, add some green tea का powder and add some honey into it, mix it together and apply it on your scalp and all through your hair and keep it for 15 to 20 minutes and then rinse it off. This might actually help to bring all the moisture back into your hair which has been gone because of you playing Holi into that harsh sun. So give it a try. So that's it for today's video. I hope you guys liked all these hacks and that you might actually use them to prep for tomorrow's Holi. So as always, please like, comment and share with all of your friends and families, and do not forget to subscribe to my channel. I'll see you super soon. Bye. My makeup looks bad, I know. To your exposed area of the body. Sorry, might stick on your body and लाइट चले गया. क्या मैंने इतना बकवास शॉट दिया कि लाइट चले गया? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आज?